Okay, so a very good afternoon, dear students. Now we'll start how we are going to merge the two arrays. This concept today we need to focus on. Okay, मतलब दो array को हमें merge करना है तो उसके लिए क्या logic आएगा? Okay, so first of all we think on how we are going to merging these two array. Just concentrate on theoretical, that is दो array पहले हम लोगों को लेने पड़ेंगे. Okay, so I'm just exploring the idea about the merging of two arrays. Okay, there are different concepts of merging, that is हम sorting करके merge करना है या normally merge करना है. Again there are two different stories. Okay, but दो array को merge करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, that we need to think here. Okay, so just concentrate on this example, that program I'm going to show here. Just concentrate. First of all, we have to take the two arrays. I'm taking array of A, B and C. C for storing the result. Okay, दो array लिए है. Again, we have to scan that array. Scan that array means we have to use the in statement. Okay, that we know that the statement in C++, right? Similarly, we have to scan the second array also. Again, we have to scan that element and display it. Okay. So how we are going to merge it? Merge करने के लिए क्या करना पड़ेगा? This logic we are going to show now. Okay. So concept क्या है आपको समझ में आया? First of all, we have to focus on what is the first part? Concentrate here. What we have to do, the program will be what? Program का जो title है वो क्या है वो मैं डालती हूँ. Program का क्या करना है हमें? We have to merging of two arrays. Okay, two arrays को हमें क्या करना है, merge करना है. So what is the code here? So basically I am declaring here the two, actually three arrays. First, A of 10 will be the first array, B of 20 is the second array. Whatever the size you have you can take, and C for storing the result. Okay, then I am declaring the variable that I required it. After that, enter the number of element into the first array. जो फर्स्ट एरे है मेरा n, इसमें कितनी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे चाहिए वो मैंने स्कैन किए इन वेरिएबल c in n. ओके, देन आई एम स्कैनिंग द होल एरे. यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आई एम डिस्प्लेइंग इट सी आउट, एंटरिंग द एलिमेंट इनटू एरे. ओके, अभी मैं क्या कर रही हूँ, एंटरिंग एलिमेंट इनटू एन एरे. ओके, इनटू एंड एरे ए, जो मेरा ए एरे है उसमें मैं क्या करूँ, वैल्यू स्कैन कर रही हूँ. ओके, ये जो मैंने प्रिंट किया. फाइन. नाउ फॉर स्कैनिंग पर्पस एवरीवन नोज दैट वी हैव टू यूज फॉर लूप हियर, एंड द फॉर सबस्क्रिप्ट वेरिएबल दैट इज आई वी आर यूजिंग आई स्टार्ट फ्रॉम 0. कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो कि मैंने एन में स्टोर किए है उसको मैं स्कैन कर रही हूँ, दैट इज एन तक आई प्लस प्लस, देन वी आर स्कैनिंग दैट एरे हियर. ओके, फाइन. नाउ सेकेंडली आई एम डिस्प्लेइंग दैट array. Okay, array display करते हुए कैसे कर रहे हैं हम लोग, again we are using for loop here. Okay, for I equal to 0, I is less than n, I plus plus. For displaying purpose same, instead of C we have to use cout, and insertion operator we are using. Okay, cout the operator slash t I am displaying it. Okay, मैं क्या कर रही हूँ अभी यहाँ पे, first array I am going to print here, simultaneously I am taking the third array that is C of 30. So I am here just initializing one variable that is k equal to 0. Okay, k equal to 0 एक वेरिएबल लिया है, वो क्या काम कर रहा है, सबस्क्रिप्ट का काम कर रहा है. कौन से एरे का, जो रिजल्टेंट एरे है c of k. ओके, सो मैंने क्या किया, directly I am copying the element from one array to another array that we have seen the logic of it. Okay, so a of I के सारे एलिमेंट मैंने किसमें कॉपी किए, c of k में कॉपी किए. k मतलब c जो है c of 30 साइज का जो मेरा एरे है, जो रिजल्टेंट एरे है, उसमें मैं क्या कर रही हूँ, वो डायरेक्टली कॉपी कर रही हूँ. और उसका रिप्रेजेंटेशन कौन आएगा, दैट इज के. के मीन्स द इंडेक्स ऑफ, के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हियर, के इज इंडेक्स ऑफ एरे सी. ओके, एरे जो सी हम लोगों ने लिया है 30 साइज का, उसका क्या रोल प्ले कर रहा है, वो इंडेक्स का रोल प्ले कर रहा है. मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली फर्स्ट एरे से एलिमेंट सेकंड एरे में कॉपी कर रहे हैं. और जैसे हमारा ए ऑफ आई जैसे इंक्रीमेंट होता है, जैसे फॉर लूप इंक्रीमेंट होगा, आई 0 से है, 0 इज लेस देन, इफ आई एम एंटरिंग द एलिमेंट इज 5, 0 इज लेस देन 5, दे अंदर जाएगा, फिर डिस्प्ले करेगा, अगेन सेम एलिमेंट कॉपी इनटू रिजल्टेंट एरे दैट इज सी ऑफ के, अगेन आई प्लस प्लस. एट दैट टाइम वी हैव टू इंक्रीमेंट के ऑल्सो. समझ में आ रहा है, के भी हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि के किसका रोल प्ले कर रहा है,
इंडेक्स का रोल प्ले कर रहा है, मतलब जैसे आई इंक्रीमेंट हो रहा है वैसे हमारा के भी इंक्रीमेंट होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर k प्लस प्लस. आई होप एवरीवन इज एग्री विद दिस. एवरीवन क्लियर दिस कंसेप्ट. सपोज फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाती हूँ. सपोज हमने ऐसे किया, सपोज ये जो है a ऑफ, लेट्स से मैंने एरे में, लेट्स से सी एरे में एलिमेंट कॉपी हुए हैं, सी एरे में जैसे एलिमेंट कॉपी हुए 1 2 3 4 एंड 5. ओके, ये जो एलिमेंट है सी एरे में किसके एलिमेंट कॉपी हुए, फर्स्ट एरे के एलिमेंट कॉपी हुए, बट कॉपी होने के लिए अगेन देयर इज सम इंडेक्स. ओके, इसको भी क्या है, उसके सेपरेट इंडेक्स देनी पड़ेगी क्योंकि उसको भी इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि सी ऑफ एरे में हमने क्या किया है, इसमें नहीं लिया है, उसको फॉर लूप में नहीं लिया, दैट्स वाई इसका जो जीरो लोकेशन में फर्स्ट वैल्यू है, वन लोकेशन में सेकंड वैल्यू है, सेकंड लोकेशन में थर्ड वैल्यू है, लाइकवाइज. ओके, सेकंड लोकेशन में थर्ड वैल्यू है, देन थर्ड लोकेशन में फोर्थ वैल्यू है, एंड फोर्थ लोकेशन में फिफ्थ वैल्यू है. ओके, सो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो फॉर लूप से होता है, बट सी ऑफ के लिए हम लोगों ने फिर फॉर लूप यूज ही नहीं किया है, दैट्स व्हाई वी जस्ट इंक्रीमेंटिंग दैट के. ओके, मतलब यहाँ तक हमने क्या किया, लेट्स से मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ए ऑफ किसके एलिमेंट कॉपी किया है, ए ऑफ आई के. सिमिलरली आई हैव टू कॉपी द एलिमेंट ऑफ second array. I hope everyone is agree. Similarly, I am scanning now. Enter the number of element into second array. Then इसको scan किया, second array को भी scan किया. Again, we are using the for loop for scanning the second array. Similarly, we are going to display the second array here. And what I am going to do here, I am just जैसे मैं display कर रही हूँ, that time I am copying the element from one array to resultant array. मतलब क्या होगा यहाँ पे? Again, the value will be what, जैसे मैं जैसे b की वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ वैसे यहाँ पे जैसे 6, नेक्स्ट वैल्यू है लेट्स से 7, the next value will be 7, the after that 8, likewise we are going to store the value. Means we just copied the element from one array to another array. जो resultant array हमारा c of k, उसमें मैंने क्या किया, second array के element copy किए, उसको प्लस प्लस किया k को क्योंकि वो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फाइनली आई एम डिस्प्लेइंग द मर्जिंग एलिमेंट इज फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन. ये देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों एरे को, ये देखो जैसे एरे ए है उसके एलिमेंट सी ऑफ के में डाले, सिमिलरली वी हैव टू कॉपी द एलिमेंट ऑफ सेकंड एरे इनटू रिजल्टेंट एरे, दैट इज बी ऑफ बी के एलिमेंट सी में कॉपी किए सिमिलरली, और हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं तो डिस्प्ले किससे करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन, सपोज फर्स्ट एरे में 5 एलिमेंट है, सेकंड एरे में 4 एलिमेंट है, सो I should be start from 0 for displaying purpose this resultant array. Okay, ये जो displaying हम लोग क्या कर रहे हो, कर रहे हैं merging element display कर रहे हैं, तो ये कहाँ से for loop आएगा, for I equal to 0, I is less than m plus n. m plus n मतलब suppose मैंने first total number of element of first array जो 5 लिए है, 5 plus second इसमें 4 लिए, तो 5 plus 4 that is 9. So 9 टाइम हमारा for loop चलना चाहिए और सारे के सारे एलिमेंट जो हमने मर्ज किए हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए. इट्स वेरी सिंपल लॉजिक. ओके, सो नाउ वी जस्ट रनिंग इट. आई एम जस्ट रनिंग दिस कोड नाउ. So we are going to check the value here. Every time this happens, okay, just concentrate here. We are entering here total number of element is 4. First array में हमने डाले 1 2 3 4. We are displaying this value. Enter the number of element in second array, that is 5 6 7. वो भी display किए. Finally, we are displaying the merging element, that is 1 2 7. So this is the result combining the two arrays here. Okay, this is the final result of merging the two arrays. Okay, so this is the logic for merging the. So there is a two part for address. We have to calculate the base address of an array in single, that is one dimensional array as well as two dimensional array. And this type of question always asked in examination also. Okay, so there is a very fixed and standard formula is given for address calculation. Okay, so we have to put just value on that formula and calculate it. Okay, so there is no big logic behind it, how it is calculated. Fine. So there is no any ambiguity. Don't get ambiguity regarding this. We are focusing on each and every part here. Okay, so basically we are calculating the address calculation for what? For a one dimensional array. Just clear this image is very important. That is, just concentrate. The first
box represents the actual address in the memory. Let's say total number of element कितने store किए हैं, 6 element store किए हैं. Okay, so just concentrate first upper box. Okay, first row, we can say that the first row है उसके ऊपर concentrate करना है. Just concentrate here this one. Okay, so this is what actual address in the memory. ये actual address है. Actual हमारी जो value है, मान लो ये जो array के element है वो कौन सा है, 15, 7, 11, 44, 93, 20. ये एक्चुअल मैंने एरे के एलिमेंट स्टोर किए हैं. बिफोर दैट एड्रेस विथ रिस्पेक्ट टू दैन एरे दैट इज सबस्क्रिप्ट, जो कि हम लोग बोलते हैं उसको इंडेक्स. हम इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स. मतलब एरे के एलिमेंट का स्टोर है फ्रॉम 0 टू 5th लोकेशन तक हमारे एलिमेंट स्टोर है. ओके, दिस इज फर्स्ट इज व्हाट, दीज आर द एलिमेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टोर. सेकंड वन दैट इज द इंडेक्स. इंडेक्स को ही टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है, दैट इज लोअर लिमिट और बाउंड ऑफ सबस्क्रिप्ट और शॉर्टकट इट इज एलबी. आई होप एवरीवन इज एग्री. जो हम लोग नॉर्मल एरे के एलिमेंट स्टोर करते हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल कैसा है. दीज आर एलिमेंट वी आर स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन. दीज आर द एरे इंडाइसेस फ्रॉम 0 टू 5th लोकेशन तक एलिमेंट को स्टोर किया है. द टाइटल इज, उसको क्या बोला जाता है इन टेक्निकल लैंग्वेज, दैट इज लोअर लिमिट और लोअर बाउंड. ये 0 को हम लोग बोलेंगे दिस इज लोअर लिमिट, एंड दिस 5 को हम लोग बोलेंगे दिस इज upper limit. Okay, this is lower limit, this is upper limit, or we can say that the upper bound here. Okay, why we are not concentrating on upper bound, because in formula there is no given that is UV, so that's why basically we focus on lower limit here. Okay, and the concentrate this 110, then 1104, then 1108. Okay, so what exactly it is? Okay, so again we are focusing on that. What exactly this 110, this is what base address. Base address means what, actual address of the first element of an array. array का जो बेस, मतलब हम लोग मेमोरी में array स्टोर करते हैं. मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं मतलब कहाँ स्टोर कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर स्टोरिंग इनटू द एलिमेंट इन मेमोरी इन पर्टिकुलर लोकेशन. ये हमारा लोकेशन है और ये मेमोरी का बेस एड्रेस है. सो बेस एड्रेस ये इट इज द 1100. ओके, सो बेस एड्रेस मींस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेस एड्रेस विल बी बी, कैपिटल बी. ओके, एंड इंडाइसेस, हम लोग अब तक इंडेक्स के बारे में बोल रहे हैं एरे में, उसका रिप्रेजेंटेशन करता है दैट इज 0. वी आर स्टार्टिंग द इंडेक्स फ्रॉम एरे दैट इज 0, उसको बोला जाता है लोअर लिमिट और लोअर बाउंड ऑफ सबस्क्रिप्ट. Here the 5 will be what, upper bound or upper limit. Okay, now the next field will be, just concentrate here, that is just concentrate width. Width means W. Here it is a 4 byte, means the memory space acquired by every element in the array is called as width. Yes, जो वैल्यू हम लोगों ने स्टोर की है वो कौन से टाइप की वैल्यू है. इफ इट इज इंटीजर, सो इट रिक्वायर्स 2 bytes. ओके, इंटीजर को कितने बाइट्स रिक्वायर्ड है, 2 bytes. तो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे विड्थ की वैल्यू जो है वो 4 byte क्यों दी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रोसेसर द इंटीजर वैल्यू गेट चेंज. इफ इट इज प्रोसेसर इज 32 bit, that is it integer requires 2 bytes. If it is processor is 34 bit, it requires 4 bytes. So according to that the width value get changed. Okay, so I hope everyone is clear the diagram of it. सबको समझ में आ गया ये point? It's very important, very clear cut formula, standard formula is given. Just say array of an element, say a of I, is calculated using the following formula. Okay, so what is the formula of it? Just concentrate here. Formula is very simple. Okay, so formula will be just address of a of I, okay, equal to, means a of I, the subscript value we have to calculate it. Okay, so formula is a fixed, standard formula is given for one dimensional array, that is b, capital B plus W into I minus LB. That's why we are focusing on lower bound or lower limit of array. Okay, where the b equal to base address that we have seen, W means the storage size of one element store in an array. कितनी कौन से साइज की वैल्यू हम लोगों ने स्टोर की है वो साइज हम लोग देंगे. I means the subscript of element whose address is to be found. Yes, हम लोगों को क्या दिया जाएगा, उसका सबस्क्रिप्ट वैल्यू दे जाएगी, whether it is upper limit or lower limit, that we need to check. And we have to calculate the address, मतलब कौन से लोकेशन में मेमोरी में वो वैल्यू स्टोर की गई है वो हमें फाइंड आउट करना है. Okay, and the LB means what, the lower limit or lower bound of an subscript. If it is not given, then we have to assume it is at 0, no doubt. Always remember that array, one dimensional array में हमें calculate करना है
एड्रेस कैलकुलेशन करना है तो हमेशा लोअर लिमिट की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ती है, इफ इट इज नॉट गिवन दो इट शुड बी अ 0. ओके, so this is a explanation of formula. Now we are focusing on the example. Okay, so now we'll concentrate on example, then we calculate the value. Okay, if standard formula is given, we have to put the value into that and calculate it, nothing logic behind it. Okay, fine. The given example, just concentrate on that example. Fine. So example will be what? The first given the base address of an array. Okay, base address की value दी है, means B of 1030 to 1900, means what about the lower limit here? LB or lower bound will be what? 1300. जैसे नॉर्मल एरे में हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने वैल्यू दी है, उसकी लोअर लिमिट क्या है, लोअर बाउंड विल बी 1300. ओके, एंड एज 1020. ओके, सो एक्चुअल हम लोगों को जो कैलकुलेट करना है, बेस एड्रेस हमें क्या दिया है, बेस एड्रेस वैल्यू विल बी 1020 एंड साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 2 बाइट्स. ओके, हमें साइज भी उन्होंने प्रोवाइड किए, द वैल्यू ऑफ साइज विल बी व्हाट, द वैल्यू ऑफ साइज विल बी अ 2 बाइट्स. तो इन साइज कितनी है, 2 बाइट्स की है. एंड फाइंड द एड्रेस ऑफ बी ऑफ सबस्क्रिप्ट वैल्यू जो है 1700, 1700. जो भी एरे का साइज है उस लोकेशन में एक्चुअल बेस एड्रेस क्या होगा, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है. ओके, सो आई होप एवरीवन क्लियर द एग्जांपल. एग्जांपल समझ में आना चाहिए. एग्जांपल में क्या दिया है, अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, दैट इज वी हैव गिवन द बेस एड्रेस. बेस एड्रेस दिया है, बट वो कैसे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के हिसाब से दिया है. मीन्स द लोअर लिमिट वैल्यू विल बी 1300 और एक्चुअल बेस एड्रेस कितना दिया है यहाँ पे, द वैल्यू विल बी 1020. साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 2 बाइट. ओके, इन द मेमोरी. पर हमें फाइंड आउट करना है कि एरे ऑफ बी 1700 लोकेशन में जो वैल्यू है उसका बेस एड्रेस क्या है, दैट वी नीड टू calculate here. Okay, so we are going to calculate the value here. The given values are b equal to 1020 and lower limit, lower bound will be what, 1300. What about the width value, that is 2 bytes. I subscript that we need to calculate, that is it's given, that is 1700. Okay, so now we have to calculate address of a of I equal to b plus base address plus width into I minus LB. Okay, so we just putting the values in given formula, that is the value of B will be 1020 plus the LB will be what? So what is width will be what? 2 into the I minus LB, what is the value of I, that is 1700 minus what is the value of lower limit, that is 1300. Calculating these all the values, subtract it, multiply it, finally the result will be what? 1820. Okay, so likewise we have calculated the address of the given one dimensional arrays. Okay, so this is the formula. Again I am revising. The address of a of I equal to base address plus width into I that we have given. Okay, that we need to calculate the address of that subscript value minus, means जो इंडेक्स है, इंडेक्स का हमें एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ता है, माइनस लोअर बाउंड और lower limit of an array. Okay, so likewise we are going to calculate the one dimensional array address calculation. Okay, that we have seen in one dimension. Now address calculation in double means what? Two dimensional array here. Okay, so here while storing the elements of 2D array in memory, these are allocated in continuous memory allocation. Always remember that how the element will be store into the memory. Okay, so there are two alternative ways to store. One is row measure and second one will be column measure. So how the row measure and column measure value we are going to store? This is two system, row measure and column measure. Okay, so what exactly it is that we have to focus on. Fine, so now the concentrate on this two dimensional array. Okay, just focus on there is a column index and there is a row index that we have seen many times. Okay, we have seen all this part many times, that is this is what the column index 0 1 2 3 ये column है और 0 1 2 these are the rows. Okay, can you think about it कि memory में इस format में store होगा ये? Yes, it is in store in this way into the memory.
basically in memory. It's not stored in this graphical. This is the logical way we are representing. So how the matrix will work, but actually it is stored in two major way wise, column major and row major. This continuous column store hoga, then continuous row store hoga. Just concentrate on this. So in memory, how it is stored, there are two parts, that is row major and column major is okay. So first of all we focused on the row wise arrangement. तो जो हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, ये रो, ये देखो, ये एरे मींस नथिंग बट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन. तो पहले फर्स्ट 4 लोकेशन में रो 0 स्टोर होगा, आफ्टर दैट रो 1, देन रो 2. इफ वी स्टोर द एलिमेंट एज अ column wise, then there is first column 0 element, continuous memory location, then column 1, then column 2, and then column 3. If we are revising the previous example here, just concentrate here the previous example, the 2-dimensional matrix. ये जो column wise जो हम लोग बोल रहे हैं, मतलब पहला कौन डिस्प्ले होगा, 8 2 3, then 6 1 6, then 5 9 4, then 4 7 2. Okay, likewise element continuously stored. If we are talking about the row wise, पहले क्या होगा, first row that is 8 6 5 4, then 2 1 9 7, then 3 6 4 2. So likewise it should be continuous memory allocation. So likewise we are going to store the element. Okay, so now we focused on how the element stored into the memory that we have seen now. Okay, so what is that, the formula? Okay, again the address of an element, we are going to calculate the value, that is a of ij, is calculated in two forms, row major and column major system. Okay, so what exactly row major? So we focused on that formula for row major. Okay, row major system is calculated using the following formula. Okay, just concentrate on formula. So address of ij equal to b plus w into n, capital N into I minus, I means we need to calculate the address of that particular location, minus L of R means lower limit of row plus j minus lower limit of column. Okay, so again where, what exactly it is, b equal to base address, I equal to row subscript of element whose address is to be found. Yes, j means column subscript of element whose address to be found. These two values we need to find the address of this subscription. Next, W will be the what, storage size of an element in an array. LR means what, the lower limit of row or start row index of matrix. Means if it is not given, we have to assume it is 0. Means it is the lower limit of row. LC means, L of C means lower limit of column, and M, capital M means number of rows in given matrix. Capital N means number of columns in given matrix. This is the standard formula for calculating the 2-dimensional array row major system. Okay, so again I am revising the B plus W into capital N. N means number of column of the given matrix into I, that is a row subscript of element whose address to be found, minus L of R means the lower limit of row plus J means, what is the J here? J is a column subscript of element whose address is to be found, minus L of C means what? The lower limit of column. Okay, so this standard formula is given. We have to put the value on that formula and calculate it. Okay, so likewise it's a standard formula. There is no any logic. We just put the value on it and calculate it. Okay, so similarly the column wise, just focus on that. Same formula is given in row wise. Just slight different here. Instead of n, we are using m here. Just concentrate here. Instead of n, we are using m means what? Number of rows on the given matrix. Okay, so what exactly it is? Again, I am revising here. Here is what is the for row major के लिए क्या? J minus LC. Here is just focus on the formula is there. When we are calculating the row major, there is a column, lower limit of column is required, and here is lower limit of rows is required. So this is a normal difference is given. Just concentrate. Whole formula is same. Instead of n, we are using m. That's it. समझ में आ गया सबको? This is a slightly different when we are talking about the column major and row major. Okay, fine everyone. Again, I am revising this part. Just focus on that. All the terms are same, but when we are calculating the row major system, the n is given means number of column is given, and when we are calculating the address of particular subscription value for column major system, there is m is given, n is number of rows. Only this difference is given. Otherwise, whole the formula is same for column major with
row measure. I hope everyone is agree with this. Okay. So now the important note is given. Usually number of rows and columns of matrix are given like A of 20, 30 or 40, 60. But if it is given, but if it is not given, it is given in the lower limit or upper limit. In this case, how we are going to calculate the total number of rows and total number of columns? There is one formula is given. Again, the formula is for number of rows, M will be calculated as upper limit of row minus lower limit of R plus 1 we need to calculate. Similarly, number of columns के लिए upper limit of column minus lower limit of column plus 1. So this we have to calculate it. If it is the given array is given into lower or upper format for two-dimensional matrix. Okay. So now we'll concentrate on example now. Okay. Fine. So we concentrate on example now. How exactly it is. Okay. So just concentrate on example here. What exactly example now? Okay. An array, that is this array x minus 15 to 10 and 15 to 40 requires 1 byte storage, means the character value storing here. If beginning location is 11500, determine the location of x 1520. Means I and j की value क्या दी हमें? I will be for 15, j is 20. Right. So now we have to calculate. Here the value will be given as a lower and upper. That's why we have to calculate number of rows, say m, and number of columns is n. Okay. So we have to calculate this upper r minus lower r plus 1. That value we have to calculate here. The value will be, so the check here the upper r means row ki value upper r, that is we need to calculate. Okay, then lower r. Okay, lower r ki value kya hai? Then 10 minus in bracket minus 15 plus 1, that is 26. Similarly, we have to calculate UC minus LC according to that logic. That is 14 minus 15 plus 1, that is 26. Okay. So हमें m और n की मतलब total number of rows and column की value क्या है? Similarly मिल गई है. Okay. अभी यही वैल्यू हम लोग पुट करेंगे किसमें? हमारे मेन फॉर्मेट में. ओके, जो फॉर्मूला है हमारा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट कॉलम मेजर वाइज कैलकुलेशन. Okay, so similarly we have focused on what value as given in previous example, that is b is given, base address given, that is 1500, w width will be 1 byte value, I and j that we need to calculate the address of it, that is I subscript value 15 and j will be 20, lower limit minus 15 up, and LC equal to 15, M equal to 26. Okay, this value is given. So we have to calculate that value. Just formula is given that address of A of ij equal to, the formula is base address plus width into I, that we need to calculate. What is the I value here? So base address की value क्या है? 1500 we are putting here. W की value क्या है? 1 we are putting here into I, the value is given, that is 15. So 15 value we are putting here, minus into bracket the minus value, that is L of R. L of R is minus 15. So we are putting this value plus M की value कितनी है? Total number of rows here, that is 26. So 26 into in J. J की value क्या है? What is the value of J now? J will be 20 here. So we are putting the value of 20 minus L of C. So lower limit of column, that is 15, we are putting equal to, we are calculating the all this is 1500 plus 1 into, just calculating all this value into 30 plus 26, we are calculating this all the calculation equal to, finally result 1500 plus 1 into 160, the calculation of all these terms. Okay, the value will be what is the address of given A of ij. A of ij मतलब क्या है हमारा? 15. मतलब टू डायमेंशनल एरे में A of 15 to 20 मीन्स जो हमारा एरे है 15 नंबर ऑफ रोज है, 20 नंबर ऑफ कॉलम्स है. ओके, उसका एड्रेस बेस एड्रेस कैलकुलेशन है, वो कौन से लोकेशन पे स्टोर है? वो स्टोर है 1660 लोकेशन. सो लाइकवाइज वी कैन कैलकुलेट द address calculation for the two-dimensional array here. This is what for column measure wise. Similarly, we have to do for the row measure wise. I hope everyone is clear it. Okay. Now we focused on the next part, that is the row measure wise. Again, same, instead of m, we have to use n here. All the terms are same. Again, we are calculating row measure wise calculation of our equation. The same value, you say that
there is only one term is newly, that is n. N means number of column. Okay. So we are calculating the address of A of ij here, just putting A of ij equal to b plus w into n into I, that we need to calculate the address of it, minus lower limit of row, plus j means the subscript value that we need to calculate the base address, j minus lower limit of column. Okay. So according to that, we are putting the value of base address, that is 1500, plus width size will be 1. That's why we are putting the 1 value here. Then 26 is the value of n into, then next value will be what, I. What is the value of I now? That is 15. 15 minus into bracket. So what is the lower limit of row? That is minus 15. That we need to put, plus 20 means what is the value of j? 20 minus 25 is 15. Sorry. Likewise, we are calculating the value. Finally, result will be 2285. Likewise, we are going to calculate the row wise calculation of two-dimensional array.